इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 मॉडल इंडिया MCQ प्रैक्टिस 1। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? बी आंसर अकबर सर थॉमस रॉय। नंबर 2, हु सक्सीडेड औरंगजेब आफ्टर ही इज डेड इन 1707 AD? Answer A, Bahadur Shah 1. Number 3, how did the Mughal Emperor Jahadar Shah's reign came to an end early in? Answer C, he defeated by his nephew in a battle. Number 4, which Mughal Emperor granted duty-free trading facility to the English in Bengal? Answer D, Farrukh Siyar. Number 5, who was the last Mughal emperor to sit on Mayur Singhasan? Answer B, Muhammad Shah. गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 मॉडल इंडिया MCQ प्रैक्टिस 1। Which of the following pairs is not correctly matched? B answer Akbar Sir Thomas Roy. Number 2, who succeeded Aurangzeb after he is dead in 1707 AD? Answer A, Bahadur Shah 1. Number 3, how did the Mughal Emperor Jahadar Shah's reign came to an end early in? Answer C, he defeated by his nephew in a battle. Number 4, which Mughal emperor granted duty-free trading facility to the English in Bengal? Answer D, Farrukh Siyar. Number 5, who was the last Mughal emperor to sit on Mayur Singhasan? Answer B, Muhammad Shah. गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 मॉडल इंडिया MCQ प्रैक्टिस 1। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? बी आंसर अकबर सर थॉमस रॉय। नंबर 2, हु सक्सीडेड औरंगजेब आफ्टर ही इज डेड इन 1707 AD? Answer A, Bahadur Shah 1. Number 3, how did the Mughal Emperor Jahadar Shah's reign came to an end early in? Answer C, he defeated by his nephew in a battle. Number 4, which Mughal Emperor granted duty-free trading facility to the English in Bengal? Answer D, Farrukh Siyar. Number 5, who was the last Mughal emperor to sit on Mayur Singhasan? Answer B, Muhammad Shah. Number 6, the Mughal emperor at the time of Nadir Shah's attack was Muhammad Shah. Number 7, a group of eunuchs means हिजड़े लोगों को बोलते हैं एंड लेडीज डोमिनेटेड इन द गवर्नमेंट। किसमें डोमिनेट किया था? तो आंसर होगा मोहम्मद शाह। मतलब किस गवर्नमेंट में किया था? तो आंसर होगा मोहम्मद शाह 1719 to 48। नंबर 8, मुगल एम्पायर इज नोन बाय द नेम ऑफ रंगीला। कौन सा मुगल एम्पायर? तो Muhammad Shah Emperor. Number 9, which Mughal emperors was not allowed to enter into Delhi by Wazir Ghiyasuddin? Answer Shah Alam II. 10, the last Mughal emperor was Bahadur Shah. His father name was Answer Akbar Shah 2. Okay.
The last Mughal emperor was Bahadur Shah. His father's name was Akbar Shah II. 12. Who was the last Mughal emperor of India? Bahadur Shah Jafar. 13. Which of the following statement is not correct about Bahadur Shah Jafar? Guys, ये नंबर 13 में ना बहुत सारा ऑप्शन था, तो वो ये स्टेटमेंट में करेक्ट था. जो नहीं करेक्ट है इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बहादुर शाह जफर. कौन सा इसमें 5 स्टेटमेंट था, कौन सा स्टेटमेंट बहादुर शाह के लिए करेक्ट नहीं है. बाकी 4 स्टेटमेंट बहादुर शाह के लिए करेक्ट है, इसलिए मैंने नहीं लिखा. ये वाला करेक्ट नहीं, इसलिए मैंने लिखा कि इब्राहिम एंड असद जो ये बहादुर शाह का पोएट्री टीचर था, ये बात गलत है. 14. द फर्स्ट नवाब ऑफ अवध सादत खान. 15. The founder of independent kingdom of Hyderabad was Nizam ul Mulk. ठीक है. 16. Who had constructed an astronomical observatory popularly known as Jantar Mantar at Delhi? Answer: Jai Singh II. 17. The book Jaj Muhammad Sahi related to knowledge of astronomy produced in number 17 guys. The book Jaj Muhammad Sahi related to knowledge of astrology produced in 1773 is written by answer सवाई जयसिंह ऑफ जयपुर. ओके गाइस, नेक्स्ट है एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज एज ईस्ट इंडिया कंपनी. नंबर 1. व्हिच ईयर वास्को डी गामा अराइव्ड एट कलिकट? आंसर 1498 AD. नंबर 2. Who was the first Portuguese viceroy in India? Almeida. Number 3. Who welcomed Vasco da Gama at Calicut? Jamorin. 4. Who is the real founder of Portuguese power in India? Answer: Albuquerque. 5. In which place in India Portuguese built their first fortress? Kochi. 6. Who were the first European to set up sea trade centers in India? Answer: Portuguese. 7. Which factories in Bengal established by Portuguese? Answer: Hooghly. Number 8. Hooghly was used as a base for piracy in the Bay of Bengal by answer: Portuguese. Number 9. The founder of Kolkata. Answer: Job Charnock. Number 10. With the reference to the entry of European power into India, which one of the following statement is not correct? तो गाइस इसमें भी 5 ऑप्शन था, तो 5 में 4 करेक्ट था, और जो करेक्ट नहीं था जो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं मैंने उसको सिर्फ लिखा. तो जो करेक्ट नहीं है वो है द पोर्टुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499. ये गलत है. ओके एवरीवन. नंबर 11. द फर्स्ट टू स्टार्ट ए जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया.
ये जो फोन में कट रहा होगा इसलिए फिर से पढ़ देते। The first to start a joint stock company to trade with India were Dutch East India Company. Which of the following was the emperor of India when British East India Company was formed in London? Answer, Akbar. During the time of which Mughal emperor did the East India Company establish its first factory in India? कौन था तब? जहांगीर. Where in India did the Britishers set up their first factory in 1613? Surat. Which British officials defeated Portuguese at Sowali? Thomas Best. Sowali, तो आंसर है थॉमस बेस्ट। 16. Who is the first European trading company was the first to establish its factory at Surat? कौन था? The English. 17. Bombay was taken over by the English East India Company from किससे लिया था? पोर्टुगीज से लिया था। ओके एवरीवन, ये खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में क्लास 9 कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करके जाना। बाय।